Hello, everyone. Good morning, ma'am. Today it is a beautiful day, and we have Harmit Chawla, who will be speaking on fitness, health, business, and lifestyle. All are interrelated. So let's welcome Harmit Chawla to Maven platform, who will guide us through how to maintain our health, how to connect with business and fitness, and of course our lifestyle, which is need of the hour. Nobody is, you know, uh, focusing on lifestyle, and here he is talking about lifestyle and fitness and health and how we can develop our business healthy in a healthy way. So over to Harmeet Chawla. Welcome, Harmeet Chawla. Thank you, ma'am. Thank you. Very good morning to you and Vasanji and all the other listeners. Thank you once again for giving me the platform to kind of talk about a subject which is very, very important and something that I dearly hold, and I've practiced it for many years. And as you rightly pointed out, going to talk about lifestyle, we'll talk about health, and about how we put all these things together, and it impacts our daily life, and in fact has a huge play in terms of what we do professionally, whether it's a job or it's business. And I felt that because the good thing is in society, there has been over the last 10 years a slow movement which is now rapidly picking up in terms of fitness. People have started to walk more, people have started to go to the gym. So I said it's very pertinent कि we'll talk about this subject and kind of connect with people on this point. Now, I've been into sports, fitness, maybe way back when I was in the second standard. So it's probably going to be more than 2 decades that I've been. It's inculcated in my DNA, uh, and it's passed on genetically or otherwise as a habitual factor to my kids. And I have always maintained that there has to be it's a process. So lifestyle and health is a process. It's not a goal oriented 2 month, 3 month, 6 month journey. It's a process that becomes part of your character. It becomes part of your how you live, and uh, it has a huge impact on your state of mental health. It has a huge impact on your physical health. Uh, it gives you a huge amount of confidence when it comes to you as a person, the way you look at yourself, the way you look at the perspective about life. I've always maintained that when we were born, God has given this body in which we have our soul. It's on rent. It's very pertinent that we take care of our body, because I'll go to the extent of saying if you can't take care of your body, then there is hardly anything that you can take care of, because you have to be in a state of thankfulness to the Almighty for giving us this physical form, and it's incumbent on us to take care of it. Uh, uh, this body is where the mind is. This body is where the heart is. We drive our work. We drive our thinking from this very being. So when we look up get up in the morning, we feel good. We get up, we feel energetic. Uh, it's all because we're keeping ourselves in the state of mind. So it's a whole process. We need to be there. Now I'll share very pertinent things about how I've gone about, because I like to share what I am done, and that kind of allows me to, or allows the audience to connect with it, and we can go through that process. So for the longest, and I'm somebody who gets up early. I get up anytime between 4:20 to about 5 o'clock in the morning. I have my routine, which is extremely set. Now, this part, when I'm saying this is the lifestyle part, that's non-negotiable. I get up early, I have my morning chores, and I'm in the gym anytime between 5:45 and 6:15 every day. For 6 days a week, I am in the gym. I'm going to touch 50 years, but I'm glad.
And I'm very thankful to the Almighty that, when I go to work out, I'm as much as a 19-year-old kid as a physically 19-year-old kid is there, or a guy is there. So, while I understand there are certain things my body will not probably allow me, but uh, my intensity with which I work out, with the, once I'm in the gym, there's no talking happening. My dedication, my time is totally focused on my working out. Uh, Beyond the working out, then I carry that whole routine to how I think, how I live my life, how I eat, what time do I eat. So, I set my goals also in terms of physically when I'm working out, how I want to see my physical form. So, I have also gone into the art of actually, which I started, in fact, before COVID, which is I started doing fasting every week for 24 hours to about 30 hours just on water. And it started from a health point, from a fitness point. That journey now has become more spiritual because fasting requires a lot of dedication and willpower. So the moment you bring that on, you're bringing so much of willpower to the table in terms of going through that process of fasting. I started one day of fasting a week, then it became 2 days, then it became 3 days, and over the last, I would say, 3 months, I've actually been able to do 90 hours of continuous fasting. A lot of people will say, is it good? Is it bad? I'm not propagating over here, or I'm not saying that you should, one should not. But yes, I still feel that one should at least cleanse their system once a week. Uh, at this age, I don't think I require that much of food. I measure my food in terms of my physical output because I work out. I'm a very serious, seriously work out, and it's athletic level workout that I do. So I know I need a certain amount of calories in food. So I look at what I am eating. I look at the caloric value. Does it require a lot of time? No, it doesn't require it. Once you've kind of figured out, you've gotten into the process, it becomes very easy. uh, so there is the part of the food, there is a part of what time you have to sleep. There is a part, I've also done is I've actually thrown the television out of my ecosystem, and it's been about now close to about 7 8 years. I don't watch television, so I'm not looking at the screen. I'm not watching television. I spend that time actually reading up about different subjects in the economy, global politics, and other things. So I take that also as a part of well-being. I take that also as a part of health because what you are reading, what you are watching also has a huge impact on your mental being. So I rather update my brain with the right kind of information and knowledge rather than something which doesn't make sense. So for entertainment, I could go for a walk. For an entertainment, I would rather chat with a friend who is also intelligent about a couple of things. So I have friends who probably are who are in XYZ industries. So I talk to them about that, and I update myself about what's happening in that industry, what's happening in their businesses. Uh, it gives you more perspective. So it is also a knowledge exchange with people who are in different domains, and you get a little more educated. You get to learn more things about what's happening around you. uh, I also cook my food. So while I have house help who cooks and all, but I make sure that I cook because then I connect with my food. I am also very clear that what I am eating, I know what's going inside my body. uh, Luckily for us in our household, Zomato is not something that we've actually subscribed in big way. Once in a while, so food is by and large home cooked. I would say about close to about 98%. We go out once in probably 1 month to eat out in a restaurant, but that's also kind of watched. Uh, some people could end up saying that ye kya zindagi hai, but the point is, I also believe that we're not living for eating food. Food taste is essential, it's important, you need to enjoy it, but not go overboard. So I don't even go overboard in terms of my workout. I stick to that. I stick to my lifestyle, but I don't take anything overboard. I have to be conscious about the fact that everything has a tipping point. Everything has to have a certain balance. uh, yes, I
allow myself the leverage of maybe, sleeping once in a while at about 11:30, 12 if I'm reading. But generally, my phone, the light of my rooms are shut off by 10 o'clock. So that's the end period. By 10, I'm pretty done. And that allows me to wake up at 4:30, get my 7 hours of sleep. And why I'm sharing this with you uh, is to understand that there is the part of working out. There's a part of what time I need to get up. There is a part of what time I need to wake up. There's a part when what time I need to eat. So if my food has to be eaten at a certain time, it's got to be that I don't skip my meals. uh, there are many times I've gone abroad for meetings and all, and if I'm entering, I don't have the luxury of sitting down and having my meal. Then I make sure that either before I enter the meeting, I'm eating, and I have actually created an ecosystem and an aura within my people who I meet, that even when the meeting is on, I could excuse myself for 5 minutes and I would say, listen, I'm just coming in 5 minutes because I need to quickly munch on something. And so, uh, and that's it, done. I don't give it a thought how the other person will feel. I excuse myself, I apologize, and I said, well, this has got to be done. So you bear with me for 5 minutes, or we could all share if you want. But for me, that time or that timetable is extremely sacrosanct. And it might sound very difficult. Yes, it can be difficult when you're beginning with it, but once you get into the zone, it becomes a process, it becomes a part of your lifestyle, it becomes a part of who you are. Then it is subconsciously and unconsciously happening. The bells in your body will ring that this is the time to eat, this is the time to do this. Uh, I don't have to think about sleep. By 9:15, I'm like already in that zone where I, want to sleep. So the body is already saying that you've been up since 4:20, time to sleep. Now, if you don't sleep within the next 45 minutes, then obviously that circadian rhythm you've kind of intervened, and then you probably will not end up sleeping till 11:30. And you get up in the morning, you'll be groggy, and it impacts the rest of the day. So uh, I've had friends who have had heart attacks at the age of 44, 45, 48, and they're lean, they don't eat out. But what they were not doing was not getting enough sleep. So you have to understand that you have to give your body at least 6 hours of 6 to 7 hours of sleep. In fact, as you start aging, you need to get a little more sleep. Like kids who need about, they need 10 to 12 hours of sleep when they're young, even more. As you start getting older, you need your sleep for your body to recover from the, I would literally say, whatever trauma that you're going physically and otherwise the whole day. It needs to recuperate, the body needs to heal itself. And so you have to connect with your own body, you have to connect with your own lifestyle, place yourself in the middle of it, and see how you're carrying your life on. And this has a huge impact on business because as Nupur ma'am also knows, with the struggle that I've had to put up my business and the challenges with it, uh, there have been days and days and days where if I did not have this regime of the way my lifestyle was, uh, I would have probably fallen apart, because that kept my uh, balance of mind, it kept my perspective absolutely focused. Because when you get into this kind of a rhythm, you're very focused, your patient levels are very high, your willpower is very high, because you are doing things, you have things around you, you see people doing things, people partying, people drinking, people enjoying the meal, and you're saying, listen, I'm not going to be part of this thing. I have my own ecosystem that I found, and this ecosystem works for me. It is something I enjoy. So somebody might enjoy partying, going to the clubs at night, but I like getting up at 4:30 and going to my gym at 5 o'clock in the morning. For me, that's partying. That's the way I unwind. That's the way I recuperate, and I find that more healthier. It's not saying that you shouldn't. Once in a while, you need to let your guard down. You need to let your hair loose, for sure. But that cannot be a lifestyle. That can be one exception once in a while you do that. But you will see a lot of people in the professional life having heart attacks, even dying. By because either they're not getting the sleep right, and because you're not getting your sleep right, you have stress levels,
you're partying too much, you're drinking too much, you're eating too much of rich food. And even if you eat a lot of food, you drink, and then you say, listen, I'm still going to hit the gym, it's not really going to suffice, because end of the day, it's counterproductive. So you need to find a balance on your health and fitness, which works for you as a body. And you also need to get up in the morning and not look in the mirror and say, listen, what if I am a little, overweight, or I'm not healthy? Somebody is calling me fat. It's body shaming. Well, nobody has a right to tell you anything. You don't need to seek validation. But at the end of the day, the fact of the matter is, when you look in the mirror, you're lean, you're fit, your tummy is in, you are walking well, you can run, you can do a lot of physical activities which you thought that by the time you're in your 50s and all you couldn't do. But if you're doing that very well, I think that's a God's grace, and that's a lot of hard work that you would have put in. And there is, and why not? Why shouldn't one look like that? So to hide behind the fact that I am like this and I accept the way I am is also a weak mind. Acceptance is not the right way. You need to push yourself and give yourself time. Don't put time boundaries that, uh, if I become a little overweight and I start the journey today, I need to do it in 6 months. Don't put these 6 months, 7 months, 3 months, 1 year, this thing. Go with the process, stick to the process, enjoy the process. If I had decided that I wanted to look a certain way, I wanted, let's say, six packs in 6 months, I would have probably gone with a huge amount of zeal and then lost the zeal if the results were not showing, or I would have tried to find shortcuts to achieving it. But I said, no, for me, health, food, the way I live is a process. It's the way I live my life. And hence, there is no time bound. That's my life. There is no 1 month, 2 month, 3 month, or 6 months. There is no, so there could be a day when I get up in the morning and I just don't feel like, it's just that my body is not responding. And I listen to my body. Today is not the day to go to the gym. Just relax. And I accept that. And I might eat a little that day, but then I know how to, counterbalance that over the next 6 days. I've learned that art of counterbalance, and nobody has taught me. I've understood my body. I've understood how it's starting to perform, how it reacts to if I'm eating 4 times a day, if I'm eating 5 times a day, or I'm eating 1 time a day. So you have to connect while, it's like meditation. When you're meditating, you connect with your subconscious mind, or you connect with your environment. The same way you have to, on a daily basis, connect with yourself. And when you connect with yourself, the answers to how you're performing and how things need to be actually come from within. And as I said, if I did not have this strictness of regime, uh, and I didn't enjoy it, I quite enjoy it, I would have fallen apart in my journey over the last 2 decades. Because being in business, being in a tense environment, being in an uncertain environment, uh, you need to be at your peak of your physical performance, because that gives you mental uh, capability. And half, or I would say more, the entire 95% of the battle is won if you're fit, if you're thinking right, your perspective is right, you're in the right zone. And when you do this, you also you don't tend to gravitate too much toward negativity. You tend to be in a positive state of mind, because you get up in the morning, and when things are not going very well for you, you look at yourself and you say, listen, at least I've been working on myself. I've got that part right. The part which is in my hand, I have it right. So I always say that life is, you get up in the morning, you don't know what will happen tomorrow. You don't know what is going to happen in the next 1 hour, but you know very well what you can do. It's in your hands. And I have a very simple mantra that, I will not allow with my actions to get into a zone where I harm myself, or I put myself in a position where I am not competitive to the last day, both physically and mentally. What God is in store for me in the next 1 hour, that is something I don't know. Uh, and if something was to, god forbid, go wrong, then also I will accept it as a part of life. But I will not take it with my own hands and bury myself. And with the way that, challenges are, I told myself, I think a good
10, 12 years back, and I was very heavy. I used to be very big. And I said, no, you're aging. You need to actually lean down. Uh, so I started working on my program for eating, caloric value, everything. And I lost a good about 18 kilos. But it took about a good 4.5 years to lose 18 kilos. I didn't drastically lose it. I was not fat. I was very, very big. So I needed to actually reduce to that. With age, I need to be more leaner. And I promised myself one thing, that listen, you will give yourself the absolute capability, the probability for success for what you set out. And for that, the first thing is that you need to be physically extremely fit. Uh, so, what I would like to kind of put it into perspective of what I've said in the last 20 minutes is, I hear a lot of people saying that, listen, I'm going to change. I will start my journey like this. And I made a resolution to be doing. No, tell yourself that you will take care of yourself. And that's a process. You will start changing your lifestyle. And in the lifestyle comes everything. It's how you deal with people, how you get up, what time do you sleep, do you play, uh, do you, what is the kind of food you're eating, what is the kind of music you're listening, what is the kind of uh, entertainment you're putting yourself to, how much of updation or knowledge that you're doing. Because when I get up in the morning and I read up a lot, I know when I'm sleeping that day that, you know what, I know what's happening here, I know what's happening there, I know what's happening in this industry, I know these things. It gives me a sense of fulfillment because I know that I have elevated my knowledge base also. I worked out today and I maintain my health quotient. So it gives me a sense of fulfillment. And when I go to sleep, I am more thankful for having, even if other things were probably not working, which are macro, which I don't control. There is a huge amount of actions that I could, which I control, and I've done them to my 100%. So that gives me a sense of satisfaction when I sleep, that, I got something right. Everything might not have worked out for me today, but whatever I could do is a sense of satisfaction of having at least done and utilized my time to the fullest in terms of achieving that part. So, Nupur ma'am, with that, I would like to open to any kind of questions that people would have on whatever I've said right now, and that'll make it a little more interesting. Yes, of course. So anyone who have any questions, they can just share. You can unmute yourself. Yes, Meenaji. Yeah, Harmit ji, good morning. Good morning, Yeah, Meena ji. yeah. We read in the books basically about calorie count and what kcal we get. Can you elaborate if that is your nation field? Based on Indian diet and Indian food that we end up eating, and that too in northern part of India with all the parathas and all. So, we Yeah, need to know there can be healthy option because some people say bread is not good, some people say wheat bread is okay, or whatever oats or mixture. So what type of grains and all, like since you have gone into diet regimen and it's working for you, so we would like some guidance on that. Thank you. sure, sure, ma'am. So I will give it to you from my perspective. I'm not a certified dietitian or a nutritionist, but Uh, let me, you asked a very, very pertinent question कि नॉर्थ इंडिया में हम लोग पराठे खाते हैं. अब पराठे मैं भी खाता हूँ. तो बट व्हाट आई डू इज मैं संडे को खाता हूँ. संडे सुबह मैं 2 पराठे जरूर खाऊंगा. ठीक है. बट व्हाट आई टेल माय कुक इज कि उस पराठे को ना आपने देसी घी में तलना नहीं है. तो आप क्या करते हो, पराठे बनाते हो, उसको सेकते हो. सेकने के बाद बेशक उसके ऊपर आप देसी घी लगा दो, थोड़ा सा चोपड़ लो या मक्खन चोपड़ लो. बिकॉज द मोमेंट you start frying it, what you're doing is you're creating an unhealthy element of the food and the oil. बट अगर आप उसको प्योर फॉर्म में ले रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि ऑयल आप थोड़ा देसी घी आप अपने खाने पे चौपड़ लो, तो आपकी लुब्रिकेशन है, विसरल उसमें जा रहा है, तो इट इज गुड फॉर यू. यू डोंट नीड टू गो ओवरबोर्ड ऑन इट. यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को 2 परांठे खाने हैं, अब मेरे 2 के बाद बड़ा स्वाद आ रहा है, मेरा तीसरे का मन कर रहा है. जहां वो मन आ जाता है ना बीच में, तो वो मन को रोकना है आपने. अब आपने परांठे के साथ फिर आपने बोला मैं अब इसका इतना सारा अचार भी खा लूं और मैं ये भी खा लूं और वो भी खा लूं. तो आपने ये देखना है कि मैं परांठे अगर खा रहा हूं तो मैं फिर परांठा और दही और थोड़ी सी अचार ले लिया स्वाद के लिए. अचार खाना नहीं है, अचार स्वाद के लिए है.
अब उसके साथ फिर आप सब्जियां भी खाओगे, तो उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी एक कैलोरिक वैल्यू है। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम में मे बी 300-400, 450, डिपेंडिंग ऑन योर एज फैक्टर, उतनी कैलोरी चाहिए। आपने उसको 1500-1200 कैलोरी की मील नहीं बनानी। क्योंकि आप अगर दिन में पूरी बार 3 बार खाना खा रहे हो और आपकी सारी मील ऐसी हैं, तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू एंड अप कंज्यूमिंग 4.5, 5, 6,000 कैलोरीज। नाउ आप अगर 1 घंटा भी वॉक करो तो आप 350-400 कैलोरी बर्न कर लोगे। तो अब आपके पास कैलोरी डेफिसिट नहीं आ रहा। अगर आप ओवरवेट हो और आप हर रोज उतना खाना खा रहे हो और उतना आउटपुट ही नहीं है फिजिकल, तो यू आर ओनली गोइंग टू कीप एडिंग वेट ऑन। सो आप परांठे को निकाल के आप अंडे भी खा लो, आप चिकन भी खा लो, आप प्रोटीन भी खा लो, बट अगर वो कैलोरी बढ़ती जा रही है और आपका आउटपुट नहीं है, तो इवन दो यू विल से यार मैं बड़ा हेल्दी खा रहा हूं बट मेरा वजन कम नहीं हो रहा, या आई डोंट सी दैट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम नॉट गेटिंग लीन, इट्स बिकॉज इट्स जस्ट नॉट दी कैलोरी व्हाट यूर ईटिंग, कि उस कैलोरी का कंटेंट क्या, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट में, बट वो कैलोरी की वैल्यू भी है। तो अगर आप कैलोरी बहुत खा रहे हो और उतना आपका फिजिकल आउटपुट नहीं है, तो इवन somebody, जैसे वो कहते हैं मैं तो अंडे खाता हूँ जी, बॉइल्ड अंडे खाता हूँ, वो फिर बॉइल्ड अंडे भी आपके लिए उतने ही हानिकारक हैं जितने परांठे हैं। तो यू कैन इंडल्ज इन अ ब्रेड वंस इन अ वाइल। अब प्रॉब्लम क्या है, आप जब छोटे थे, हम छोटे थे, तो ब्रेड खाते तो मोटे नहीं होते थे, क्योंकि हमारी आउटपुट बहुत थी। बट हम जिस उम्र में, द मोमेंट वी गेट इनटू आवर 40s, 50s, 60s, तो हमें ब्रेड भी बुरी लगने लग जाती है, ओट भी बुरा लगने लग जाता है, परांठा भी बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को ऑलरेडी एक लेवल पे ला के खड़ा कर दिया, और वहां से और मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। और मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है और आपकी वैसे फिजिकल आउटपुट इतनी नहीं है, तो फिर क्या होता है, माइंड कहते हैं मैं ब्रेड खाऊंगा तो ब्रेड ब्रेड इज नॉट गुड फॉर मी, जैम इज नॉट गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। तो मैं कह रहा हूँ आप ब्रेड जैम भी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब हर रोज ब्रेड जैम खाओगे तो प्रॉब्लम है। तो एक उम्र के बाद आप बच्चे को आप दे दोगे, 7-5 साल के बच्चे को, वो तो दिन में 3 बार भी खा लेगा, वो मोटा नहीं होगा, बिकॉज उसकी मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट है, वो इतना भाग दौड़ कर रहा है। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर एजिंग 20 तक, आप अब आप आज देखो कि बच्चे इतने मोटे हो रहे हैं बिकॉज उनके माँ बाप उनको पिज्जा और बर्गर्स और इससे इतना ठूस रहे हैं, एंड दैट इज जस्ट प्रोसेस्ड फूड। अब वही वो बच्चा मोटा ही होगा, अब वो चाहे खेले भी सही, बट इतनी कैलोरीज जा रही हैं उसमें, और वो ऐसी कैलोरीज हैं which are, and you don't know about the quality of that meal. We don't know the hygiene factor. Even if you're buying it from a brand, we don't know what's going in. So you have to understand, इस उम्र के बीच में आपके पास उतनी बैंडविड्थ है कि आप खा लो। when I was in my early teens, मैं आधा किलो फ्रेंच फ्राइज घर के बने हुए खा लेता था, बट मोटा नहीं होता था। बट मैं आई कैन नॉट गो एट द एज ऑफ 50 एंड से कि मैं आधा पौना किलो आलू के फ्रेंच फ्राइज खा लूंगा, तो इट्स नॉट गोइंग हैपन। बट अगर मैं वंस इन अ वाइल 10-12 दिन में थोड़ी से फ्रेंच फ्राइज खा लूं, तो एम आई गोइंग टू बिकम फैट और इज इट बैड फॉर मी? नॉट नेसेसरली, एज लॉन्ग एज माई आउटपुट, exercising regime and my sleep pattern, and I am doing things is in order, I can do it. But खाना बनाने का भी तरीका है। अब आप अगर देखेंगे पहाड़ों में चावल ज्यादा खाते हैं, बिकॉज वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जब आप ऊंचे पहाड़ों में रहते हो, ऑक्सीजन कम होता है, you're burning more calories, you need more carbs because you need instant energy. When you go to the coastal areas, the weather over there is very humid, you lose a lot of energy, so you need a lot of energy back, and carbohydrates will tend to give you a lot of energy immediately. हम दिल्ली और इधर आ जाएं, तो वी नीड टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज वी कांट गो टू मच इनटू राइस, वी कांट गो टू मच इनटू यू नो मैदे वाला खाना। तो अगर आप इधर देखेंगे, दे ईट अ लॉट ऑफ कसावा, दे विल ईट अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज मोर कार्बोहाइड्रेट रिच। अब नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस। So a little bit of chawal will do. We, it's the environment also, it's the altitude also, it's the climate also. It makes a difference. So with time क्या हो गया कि अब हम पहाड़ों वाला खाना प्लेन्स में भी आ गया, कोस्टल खाना इधर भी आ गया, बट
वो खाना आप खा रहे हो बट वो उसके एनवायरनमेंट और उसके वेदर के लिए सूट करता है। आप अगर करीबियन में चले जाओ, वहां पर क्योंकि ओशन है, या जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं, तो दे विल हैव मोर कार्ब रिच फूड। प्रोटीन भी खाते हैं बट कार्ब रिच फूड भी उनको चाहिए। अब वो हम दिल्ली में बैठ के खाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। आई होप दैट आंसर्स, मैम। Thank you. Thank you. Really good. Yeah. Thank you. Any other question that somebody has? आज संजू जी क्वाइट है। So anyone have any question, please Hello. Hi, unmute Harmit. yourself. Hi Sanju, morning. I was Morning. hoping that you're going to put me on the, you'll put me on a spot. No, not at all. I'm just, yeah, it was fantastic hearing what you had to say about your such discipline, resilience. Um, you It know, helps in business. It helps very, very much in business. yes, yes. And I was impressed, like you said that you have been able to fast for 90 hours. That is No, 90 days, every day, 24 hours, and one day I do about 30. I try to push to about 30, as close as possible to a 36 hours. wow. Even 24 hours is great, yeah. I mean, how do you manage to do that? It's in the mind. 36 hours too, is it? Yeah. Acha. So Sunday दोपहर को खाना खाया, and then I hit the food maybe on Tuesday morning. Ah, acha. And it helps, Yeah. right? Helps the body to. It's working very well for me. मतलब मैं अपने मुंह से बोलूं, मैं 50 साल का लगता नहीं हूँ उस बारिक में। बाल Of course. स्किन बिल्कुल ठीक है। आई एम स्लीपिंग वेरी वेल। पीपल फील कि नहीं, पता नहीं भूखे सो रहे हैं तो नींद नहीं आएगी। इनफैक्ट मेरी स्लीप और डीप हो गई है। I don't have any bloating. I don't have any issues, and I don't have any lack of energy because मैं कैलोरीज तो ले रहा हूँ। जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं अपनी कैलोरीज पूरी खाता हूँ। तो मैं आधा घंटा खाना धीरे से खाता हूँ, बट आई हैव माई कैलोरीज। उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें थोड़ा कार्ब्स भी होंगे, फैट भी होंगे, बट आई हैव इट। हफ्ते में एक बार फास्टिंग करते हैं। मैं हर रोज कर रहा हूँ। मैं पिछले 90 दिन से हर रोज कर रहा हूँ। हर रोज करे? हाँ। एक ही मील लेते सो हैं? मैं एक ही मील पे जीता हूँ। हाँ, वाह, ओके। सो आई जस्ट ईट वंस अ डे एंड आई एम डन। उसके बाद मैं फिर मुंह में कुछ नहीं डालता। मतलब उसमें फिर एक काजू किशमिश, एक बादाम भी नहीं जाता, एक बिस्किट भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं। Okay, It's just lukewarm water after that I'm on. amazing. Yeah. But then I don't, अब फेब आ रहा है तो मैं मार्च से इस चीज को बंद कर दूंगा, because I don't want to push my body into 12-month phase. मैंने सर्दियों में कर लिया, and then when March comes, I'm just going to give that body a little bit of change, and I will go into bring it down to 18 hours, and I will have मतलब 3 घंटे जो मैं खाना खा रहा था उसको एक बारी की जगह मैं उसको जो 6 घंटे का मेरा विंडो मिलेगा, उसमें मैं 2 बार मील खाऊंगा। तो मैं खाना उतना ही खाऊंगा बट उसको 2 बारी में तोड़ दूंगा। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि आपकी इंसुलिन लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो एंड समर्स में द वेदर इज चेंजिंग, so the body tends to react in a different way than winters, because now when summer comes you will perspire, it will be more humid. I will have more energy loss. I'm going to continue working out, so I will need a little more energy to go through my day and my physical activity. So with that I will actually then have the same amount of meal, but I'll make it into 2 meals. अच्छा। So मैंने इसे 12 बजे खाना खा लिया, 12 बजे एक मील ले लिया, और उसके बाद में मे बी अबाउट 4 साढ़े 4 बजे कर ले। तो जैसे ही मेरा इंसुलिन लेवल हुआ मैंने फिर एक मील दे दिया, एंड दैट्स अबाउट इट। कूल। तो आपने मतलब खुद सीख लिया ये सब न्यूट्रिशनल, डन अ कोर्स इन न्यूट्रिशन, और No, I have not done or any. you have a I teacher or I something? started
experimenting on myself. I read up a lot of stuff, and I put myself in the dock, and I made myself the guinea pig, and I said, okay, let me do this, and see how the body responds. And over the last 7 years, I went from 5 meals to 4 meals to 3 meals, and then to 1 meal. Okay. And the 1 meal has taken, for me, the lethargy, जो body आपके थोड़ी सी lethargic है ना, वो खत्म हो गई. अच्छा. So I'm like very alert the whole day. So that's how it's worked. I mean, it's worked for me. I'm not saying it might work for you, but it's something that you will need to kind of figure out by doing yourself, experimenting with your body, what makes sense. But yeah, मेरे पे profound impact है physically also, or mentally also, because अब मेरे लिए doing a 1 meal a day is no more so much of a fitness or a health thing. As you said, it's very difficult. So when you do something like that, it requires so much of it's so much going into yourself and bringing that willpower every day कि यार मैं ना 24 घंटे अब सिर्फ ये खाना खाया, मैं अगले 23 घंटे पानी पे निकालूंगा. It's not easy. And 15-16 घंटे तो निकालना बड़ा आसान है, 7 घंटे तो आप उसमें सो लेते हो. But to go from 16-17 hours to the 24 hour is such a challenge, because इतनी भूख लग रही होती है, and then you have to, but by now it's become very normal. So you're good. अब वो suppress कहीं ना कहीं करना पड़ेगा. And I physically saw it with my own grandmother, who kind of she lived for till about 103. For about a good 50 years, she practically lived on 1 meal. And she was absolutely hale and hearty. ना उन्हें end में जाके थोड़ा सा cataract हुआ था, ना उनको कोई problem ही नहीं थी. मतलब she actually had no problem. She was active till her age of 103. So it's kind of struck to me that it worked for her. Maybe in my genetic DNA code there might be this thing. And now my father is also practically on 1 meal. He hardly eats, but he's active. Touch wood. So there is science to prove, and it is now being researched abroad. A lot of people are starting to go into that OMAD diet, and it's working very well. It's working for a lot of people again, but I'm not saying I'm propagating it. To each his own, whatever suits you, but it works for me. Wonderful. Thank you for that insight. Pleasure. Nupur ma'am, आपका कोई question? No, nothing as such, because I know how hard you work, and it is really amazing. So, but I would So- like you to ask. I would like you to tell how business is connected Yeah, with. Yes. I was coming to that part now. Yeah. So while having explained what I do, how is business connected? Because the whole idea as a businessman, for me, that's the part of my being. So the health, I'm not a nutritionist, I'm not a health coach, so I'm doing this for myself. What is my main area is that I'm a businessman. Now a lot of people, as I said, ask me, भाई क्यों तू पागल है, क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा है, ये क्या जिंदगी है? तो मैं कहता हूं कि this discipline of what I am doing and what I've been discussing is my commitment to myself personally, and it is commitment to my professional goal. Because I want to establish what I want to establish. For doing that, I need to be like an athlete who wants to go into Olympics. I am a business athlete who is in a business Olympic. And for that, I mean, I have to perform at the highest level, which is both physical and mental. I don't want to be in a situation where I put the hard work and tomorrow I start falling sick when my business is growing, or I'm not capable of running it because physically I'm not in the right zone health wise. So that's my outlook, that is my respect to my own time and to my own endeavor and to the efforts and hard work that I have put in, that it culminates in giving me the right psyche, the right physical health,
to overcome the challenges both on a daily basis and the over a period of time in business. And as I said, ma'am, that uh, the challenges in business environment are so intense and immense that to overcome that stress and to have a very clear capability to think through, because you will have situations which are so uncertain in business that you need to have clarity of thought. That clarity of thought comes in when you're very composed, when you're fit. Because when you're unfit, or I've seen people who are unfit, matlab, they're not able to, मतलब आधे घंटे की मीटिंग के बाद भी they will find it very difficult to go through the meeting. You know, impatience आ गया. So uh, you can be sitting in meetings, you could be deliberating on things for hours and hours, and you need to have uh, your mind working very, very sharply. So for me, the physical health, the lifestyle, as I said, is extremely important. So it's not this adding to that, it's both ends meeting each other in the middle. My eventual goal is that I need to perform in my business arena and at the highest level, both mentally and physically. So I give myself that lifestyle which allows me to perform at that level. Uh, the other part is on a personal spiritual level, I want to be in that journey because it again aids me in that physical capability and the spiritual capability. Now I started finding the spiritual capability in it. And even in business, in one of the last sessions we spoke about, you need at beyond a certain point of time, you need a certain huge amount of spiritual well-being coming into your business as an entrepreneur, in terms of your outlook, in terms of your business decision, in terms of how you see your business and how you expand. So, for me, this lifestyle is not only physical, it is spiritual, it is also aiding me big time in my business. And as we've been reading up over so many years now, that you have people at high levels in businesses. हम पढ़ते हैं कभी कोई ट्रेडमिल पे था, किसी की डेथ हो गई, वो 40s में था, बिल्कुल फिट था. अब वो क्या होता है, हम एक एस्पेक्ट देते हैं कि देखो जिम जा रहा था तो फिट तो था. अब हमें नहीं पता कि वो रात को लेट सो रहा था 2 बजे, उसकी लाइफस्टाइल क्या थी, खा कैसा रहा था, स्ट्रेस लेवल. सो जिम जाना इज नॉट जस्ट गुड इनफ. You need to have all the parts balanced out. Excessive gymming is bad. Excessive of anything is bad. You have to put that as a science. Right time to sleep, right time to eat, everything, and that is going to aid your business. It will aid your business because it makes you capable. How it aids business is, it's not that it's आपके business decisions आपको मिल जाएंगे. It is making you more capable to run it. It is making you mentally, physically more capable to run your business. It allows you to overcome those challenges and go through that time. So for me, that part is more important, which a lot of people don't understand. उनको लगता नहीं यार, मैं अगर अनहेल्दी भी हूं, मेरा दिमाग चल, मैंने करना तो दिमाग से ही है ना, मैं. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना है, आपने अपने फिजिकल बीइंग को भी ट्रेन करना है. अगर वो नहीं करना होता तो फिर हम जो एथलीट्स होते हैं वो इतनी कड़ी मुशक्कत क्यों करते हैं टू परफॉर्म फॉर दोज 3 minutes इन ओलंपिक. दे विल वर्क आवर्स एंड आवर्स आवर्स एंड आवर्स. द सेम थिंग एक्चुअली डज वर्क आउट फॉर यू इन योर बिजनेस अरीना ऑल्सो. चाहे आप, मैं कह रहा हूँ, बिजनेस ना भी चला रहे हो, आप नौकरी भी कर रहे हैं, बट क्या हर्ज है सुबह उठ के, व्हेन यू लुक गुड एंड यू फील गुड एंड यू फील पॉजिटिव एंड यू लुक, व्हेन यू से लिसन आई एम फिट, यू आर ऑलरेडी रेयरिंग टू गो and head on into your situation in life. So I think that is what I would sum it up, ma'am. Wow, amazing. That is so amazing. Anyone who have any questions? I So have I a think, question, but yeah, can you Yeah, just hold on for a second? yeah, please, please. please. Yes, Sanju. Ah, so, like, Harmit ji, Yeah, ma'am.
You have been speaking often of business pressures where you have to take, they are very intense and highly critical. Decisions have to be made. So, can you give us an example of, a very tense kind of situation which you face normally, regularly, and which you then are able to diffuse uh, very easily? From the life perspective. Yeah, from your life perspective. Of course, you don't have So to give details, yeah, but still. no. So I'll tell you something. Uh, in the last 1 year itself, okay, there's a lot of stuff that I was doing, and in business, you have to understand. You understand probably very well. There are certain things you hold the cards. You are in command of something, and sometimes you're dependent on people. Now, there is something that I was doing, and we, हम कर रहे हैं, और अब उसमें और भी बंदे इन्वॉल्व हैं. अब आप एक दिन उठते हो और आपने 5-6 महीने बड़ी कड़ी मुशक्कत करी. अब कोई और बंदा मान लो उस चीज के ऊपर नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रहा, चीज हो रही है, एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग पुल्ड बैक. एक बार होगा, 2 बार होगा, तो फिर देन बिकम स्ट्रेसफुल because you have expectations out of it. There are plans that are made, but things are not working out. Not on that given day, how do you cope up with that? The only way to cope it up with that is I can let it go. Yaar, I'm feeling up, मेरे को बड़ी खुंदक चढ़ी पड़ी है, या I'm feeling very down. But what helps me is the fact that nothing else changes. I will get up at 4:30. I'm going to hit the moment I hit the gym. I forget what has happened. I, for me, that it's like a mechanical lifestyle. Cut, 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 cut. Now, when you're doing that, it actually helps me overcome any stresses or the negativity from the point of view of that. And I'm like, ठंडे दिमाग से फिर मैं सोचना शुरू करता हूँ कि यार अच्छा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ. बट अगर मैं वो सारी चीजों को फॉल अपार्ट कर दूं, मैं अब आज लेट सो रहा हूँ यार, मैं चला जाता हूँ, चलो आज ना 2 ड्रिंक लगा लेते हैं. एंड बिकॉज सी व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, यू विल बिंज ईट. एवरीवन डज. थोड़ा खाना ज्यादा खा लिया, या चलो आज कुछ ड्रिंक्स ज्यादा लगा ली, या पार्टी कर लिया, यार मैं आज मूड में नहीं हूँ, अब दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, या व्हाटएवर. So you give yourself that excuse to let go of that strictness or discipline. With me, it works the other way. I actually get more stricter because frustration आ रही है कि यार ये काम कर रहे हैं, हो नहीं रहा because of this person, maybe because the government policy has changed and all of a sudden cut ऐसे चीज हो गई. Now अब क्या करें? अब आपका 10 महीने उसमें बर्बाद हो गए, टाइम पैसा बर्बाद हो गया. अब वो होगा नहीं होगा, कैसे होगा? अब उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए यू नीड टू बी इन अ काम माइंड. व्हाट मेक्स यू काम इज we talk about manifestation, we talk about positivity, but what is that gives you that capability to manifest the positive thoughts or be in the right zone? It is your physical being. दिमाग और मन तो उसी शरीर में है ना. तो अगर शरीर ही ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आप माइंड, और आप अगर आप कठोर नहीं हो, और मेरी कहावत है व्हेन टाइम्स आर टफ और यू आर गोइंग थ्रू अ टफ सिचुएशन, मेक योर लाइफ more disciplined and more tougher, because now the choice is either you cut that or you, आप अपने ऊपर टफनेस कर रहे हो, वो आपको और सक्षम बना रहा है अपने टाइम से निकलने का. और वो जब सक्षम बनाता है तो आप, मेन चीज क्या होता है? माइंड. कि मेरा माइंड लेफ्ट राइट नहीं जा रहा. आई एम ऑलवेज वर्किंग 24 hours टू ब्रिंग माई फोकस इनटू द बैलेंस. एट जो हम स्केल पे 0 देखते हैं, ना मैं इधर हूं, ना मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूं, और ना मैं बहुत पॉजिटिव हो रहा हूं. आई नीड टू बी इन द बैलेंस ऑफ द 0. बिकॉज मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा या पॉजिटिव हो जाऊंगा, देन आई कुड ओवर रिएक्ट टू अ सिचुएशन वेयर मुझे लगा कि एक चीज मेरे फेवर में हो गई, एंड आई माइट ओवर रिएक्ट एंड टेक इट टू बी बियॉन्ड. तो मुझे रिजल्ट आना है 2, और मैं इतना इलेटेड हो गया हूं कि मुझे में उसमें 15 का रिजल्ट दिख रहा है, 20 का रिजल्ट दिख रहा है. वो भी गलत है, बिकॉज देन दैट इम्पैक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग. तो समथिंग गुड हैज हैपेंड, यू नीड टू स्टिल बी इन द बैलेंस टू अंडरस्टैंड कि इसका रिजल्ट इतना ही है, ज्यादा भी खुश वो नहीं है.
और इतना भी नेगेटिव नहीं होना कि आप बाउंस बैक ही ना कर पाओ। तो दोनों चीजों के बीच में हर वक्त बैलेंस रहेगा। तो नेगेटिव भी आप होगे, पॉजिटिव भी आप होगे, बट दोनों ही स्टेट में कंटिन्यूसली नहीं रहना। अब उस चीज के लिए द बेस्ट वे इज दैट लाइफस्टाइल। और मैं कहता हूं कि हर चीज अनप्रिडिक्टेबल है, बट मेरी लाइफस्टाइल मेरे लिए प्रिडिक्टेबल है। मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए मैंने 4:30 उठना है, कुछ भी हो जाए मैंने उतने टाइम पे खाना खाना है, कुछ भी हो जाए मैंने उसी टाइम पे सोना है। तो मैंने एटलीस्ट जिंदगी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी में कुछ चीजें तो प्रिडिक्टेबल कर दी हैं, और वो मेरे एक्शंस हैं। तो मेरे को पता है कि सुबह उठ के और कुछ आज होगा कि नहीं होगा, बट ये 10 चीजें तो मेरी प्रिडिक्टेबल है ना। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स, जो मुझे लगता है, हम वी ऑल, irrespective how strong we are, we don't like the unpredictable. So I have, at least in my own sweet way, made certain things predictable for me, and which is my life. At least the lifestyle, the outcome is unpredictable, but what my actions are predictable to me. So that just allows me to go through that phase very easily. मतलब इट इज स्टिल अ चैलेंज। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं कोई भगवान हूं कि मैं उस मेरे को बुरा नहीं लगेगा या मैं, बट माय रिएक्शन एंड माय कैपेबिलिटी टू मैनेज माय negativity or to manage my stresses becomes much more easier. For example, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब सुबह उठता हूँ, and if I take my heartbeat, I am like at 47, 48 resting. So I know that my heart in the morning at resting is performing very well. If the whole day, my heartbeat tends to be between 65 to about 73. While people at my age, they are sitting at 100, 110, 105. But when I look at that, I know that despite all the challenges and the stresses, my heart is performing perfect. It's not, it's not beating too much. There's no palpitation. वो परफेक्ट चल रहा है, खून ठीक निकल रहा है, खून का फ्लो ठीक है। तो आई एम लाइक ओके, ठीक है, आई एम इन अ गुड जोन। एज लॉन्ग मेरी दिल की धड़कनें ठीक चल रही है, आराम से चल रही हैं, तो इसका मतलब मेरे ना, समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं उसी दिल कह रहा है वहीं पे चलूंगा, ऐसे आराम आराम से चलूंगा। ज्यादा तेज भी पंप नहीं कर रहा ब्लड, ज्यादा स्लो भी नहीं कर रहा, वो परफेक्ट कर रहा है। तो हमें अपना हार्ट बिल्कुल परफेक्ट रिदम में पंप कराना है ब्लड को। Wow. सो Anyone who have any question? That is amazing viewpoint of yours, Harmeet, for giving थैंक us यू। a beautiful overview of your fitness regime. And I hope everyone should follow this kind of fitness regime to मैं improve मैम their इसको करेक्ट lifestyle. करूंगा, फिटनेस रिजीम नहीं, लाइफस्टाइल रिजीम। हमारी ना हमारी दुनिया में आजकल ना लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, Yes, लाइफस्टाइल it is. डिजीजेस हो गई हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है, ये स्ट्रेस हो गया, ये जो डायबिटीज हो रही हैं, ये एक्चुअल लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। Yes, of course, of course. तो And I would say everybody हाँ, should follow your lifestyle. Of course, नहीं not. नहीं, इतना कठोर नहीं कर पाएंगे, अपना करो जिससे आपको खुशी मिले। बट हाँ, थोड़ा सा जिंदगी को कठोर करना जरूरी है। वो लगता कठोर है, होता नहीं है बाद में। जैसे Yes, मेरे लिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है जो सुन रहे हैं उनके लिए कठोर हो, मेरे लिए कठोर नहीं है, बिकॉज आई बिकम वेरी कंफर्टेबल विद इट। सो फॉर मी इट्स नॉट कठोर, yes, but you have to be outside your comfort zone if you want anything. Even if you want physical well-being, health, you want anything in life, you have to go outside your comfort zone. yes, of course, of course. That is what you have to do, and you have to be very strong mentally to Yeah, follow this. yeah. Because people do not have that kind of mental strength, and they have to learn from Harmeet how to go Okay. about it. Yes. And anyone have any question you can ask? हरमीत जी, Yes, आपने yes, बहुत Neelam बढ़िया ji. बोला कि Thank you. कम खाओ और गम खाओ रिलेट करता है। और हम लोग हाँ, बहुत ज्यादा खाते हैं तो हम बहुत सारी टेंशनों में भी चले जाते हैं। और बेसिकली डिसिप्लिन ऑफ लाइफ बहुत मायने रखता है, जो हम लोग के पहले बुजुर्ग लोग, सब लोग, बड़े लोग करते थे। और पहले absolutely. क्या था कि, और आई ऑल्सो बिलीव दिस, कि जो हम
काम करते हैं, जो हम अर्न करते हैं, जो हम सुबह उठ के अपना जो अर्न कर रहे हैं, और वो हम खुद बना के, खुद क्रिएट करके उसको अगर एब्जॉर्व करते हैं, तो वो हमारे लिए एज ए फल कहें या अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस कहें, वो हमारी नीड है। एक मैंने सेकंड क्लास में एक मेरे बेटे की बुक थी, तो उसमें पढ़ती थी, तो उस स्टोरी से मुझे बहुत होता था कि हम लोग खुद बना के खाना बहुत जरूरी है। वो शायद था कि हैन एंड द या चिकन, 7 चिकन तो अपने बच्चों के लिए बनाती है। तो बिल्कुल आजकल की नई जनरेशन क्या है, एवरीथिंग इज रेडी, सब या कुछ रेडी 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 रेडी, उनको उसकी वैल्यूज नहीं लगता कि अगर कहीं से बिल्कुल तोड़ के लाते हैं, बना के खाते हैं, तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड तो है हाँ, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं है, उनकी लाइफ का या रियलिटी में नहीं आता। तो वो चीज आजकल, मैं भी एक्चुअली 2-3 ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ कि मैं डिटॉक्स वाला भी है, तो और मैंने काफी पहले भी बहुत पढ़ा है। तो उसमें जो हम लोग खाते हैं वो हमारा इमोशनली भी इफेक्ट करता है, और हमारे स्पिरिचुअली और सोशली भी हमारा वो ही क्रिएट हो रहा है। तो बिल्कुल। नई जनरेशन को हम गाइडेंस क्या दे सकते हैं, वो आपने काफी कुछ क्लियर किया। अच्छा लगा आपका सुन के। लेकिन थैंक यू मुझे मैम। एक बस हम ये था कि लाइफस्टाइल हर एक कोई कहता है, इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज करो। तो कुछ लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट वेज में सब सिखा रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं लोगों के पास, और वो रिजल्ट जो भी आता है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी जैसा माहौल है उसमें चले जाते हैं कि मैम आजकल जैसा इसका बाहर हो रहा है कि मैं इसका हर नहीं, तरह का खाना मिल रहा है, हाँ हर तरह का नहीं, खाना मैं मिल रहा मैं मैं यहाँ पर 2 सेकंड इंटरजेक्ट करूंगा। है। मैंने एक पॉइंट बोला कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी और हम अलग इंसान हैं। तो व्हाट वर्क्स फॉर, संजू जी ने पूछा तो मैंने बोला कि देखो इट वर्क्स फॉर मी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता और ना मैं बोलना चाहता हूं कि आप ऐसे करो। मैं क्या कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में 2 मिनट अपने साथ बैठो और अंडरस्टैंड करो आपकी जिंदगी क्या है। अब बड़े बार ना मेरे साथ लोग बैठते कहते हैं यार हरमीत मेरे पास ना टाइम नहीं है। मैंने ये तो मैं सुनने को राजी नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, पर मैं टाइम निकाल रहा हूँ। क्योंकि मैंने टाइम इसलिए निकाला, मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, मेरा डिसिप्लिन बना हुआ है। तो मैं उसमें देखता हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, जो मैं बेफजूल में कर रहा हूँ, जो मेरा टाइम ले रही हैं। मतलब आई नीड टू प्रायोरिटाइज माई एक्टिविटीज इन माई टाइम। मेरे पास तो वही 24 घंटे और मैंने 6-7 घंटे सोना भी है। तो बच्चे जो टाइम है मेरे को उसमें प्रायोरिटाइज करना है। अब उस प्रायोरिटी में मेरे को देखना है कि जो मैं 2 घंटे कुछ कर रहा हूं, क्या वो एक्टिविटी मेरे को स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एलिवेट कर रही है। अगर नहीं कर रही तो मेरे लिए वो नॉनसेंसिकल है, वो चीज 2 घंटे मैं बर्बाद कर रहा हूँ। अब चाहे वो टीवी हो, चाहे मैं ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जहां ना मुझे कोई मेंटल स्टिमुलेशन मिल रही है ना कुछ मिल रहा, तो मैं फिर वो भी नहीं मिलूंगा। तो आपने अपनी प्रायोरिटी चूज करनी है अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हर आदमी को 4:30 उठना है। अगर आप 7 बजे उठते हो तो 7 बजे उठो, बट फिर 7 के बाद क्या कर रहे हो वो प्रायोरिटी बनानी है, वो लाइफस्टाइल होनी चाहिए। उस लाइफस्टाइल के अंदर आपको देखना, मेरे लिए 4:30 उठना इसलिए क्योंकि मैं 6 बजे जिम जाता हूँ, बट 4:30 से 6 बजे तक मैं क्या करता हूँ, अपना अदरक और नींबू का पानी बनाया, गर्म पिया, उसको पीते 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 मैंने नेट पे गया और मैंने देखा कि भाई अच्छा यूएस में क्या चल रहा है, मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, इस इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो बाय 1 आवर व्हेन आई एम हिटिंग द जिम, मैं अपनी नॉलेज को अपडेट कर चुका होता हूँ। या मुझे मेल भेजनी है कहीं पे, सो आई ऑलरेडी डन अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई एक्टिविटी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये वन है यस, वन मैं है एग्रीड हूँ आपके उससे। मैं कह रही हूँ प्रैक्टिकली अगर हम लोग उसको करें तो वो बहुत जरूरी है, और मैं भी करती हूँ अपने हाँ नियम को। मैं भी सुबह उठता 5 बजे उठ जाती हूँ, और मेरे एक्चुअली अभी मेरे को कुछ करना नहीं है, आई एम अबव 60, तो लेकिन फिर भी मैं नॉलेज गेन करती हूँ सबसे, और मुझे मैं अपने फॉलो करती हूँ उसको। तो थैंक यू प्लेजर आपका। मैम, प्लेजर। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। Anyone else who have any questions? Harmeet ji, good morning. मॉर्निंग मैम। Very, very inspiring. My God, you get up at 4:30. Very inspiring. आजकल के जमाने में. What time do you go to sleep? I ma'am switch off my phone by 9:30, 9:45 and I'm in bed. Uh,
and by 10 I slept off. I've slept off. Very inspiring. I think one should at least follow this regulated life to achieve something, like you said. It's worked wonderful for me. There's no television, so my wife is also sleeping up by 9:45, 10. I'm done, and it's actually rubbed out on my kids over the last so many years. My son is 21, my daughter is 16. अब वो भी टीवी नहीं देखते, इतने सालों से उन्होंने भी टीवी नहीं देखा, तो अब वो पढ़ते हैं या वो म्यूजिक सुन लेंगे या वो कर so the habit in I always believe we have to lead by example as parents. It works very well. So our household is like light switched off at home by 10, 10:30, unless something is there, we're done. So even if we call somebody home, we request them कि जी आप 6:30 बजे तक आ जाओ, 8:30 तक डिनर कर लेंगे और आप भी घर चले जाना 9, 9:15 तक और घर जाके सो जाना. तो we don't do a get together of a family where 1 बजे तक रात को बैठे हुए हैं. We are like early start and we're done by 9:30. आप भी अपना घर जाओ, उसके बाद आप सो खेलो कूदो जो आपकी मर्जी. मेरे घर से आप 9:30 निकल जाओ, मैं सोने वाला हूँ. तो so people who come to our house expect that कि नहीं, we expect कि हरमीत ने ना हमें 10 बजे घर से बाहर निकाल देना, बोलना घर जाओ और सो जाओ, बट आप जल्दी आ जाओ मेरे पास, 6 बजे आ जाओ घर पे. तो we do that. I mean, Wow. I don't have those social pressures. I mean, if somebody says नहीं मैं तो आऊंगा ही 10 बजे, बोलूंगा थैंक्स यार, तो आप अपने घर पे पार्टी करो, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है. मेरे घर आना तो आपको 6:30 आना पड़ेगा. दैट इज इट. तो पीपल हैव एक्सेप्टेड इट कि ये पागल है, इसके घर अगर जाना तो इसी टाइम जाना पड़ेगा, यही होगा. तो हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को वैसे मैनेज करा हुआ है अपने लोगों के साथ, एंड पीपल आर फाइन विद इट. To do it this day after day and always, it's quite a feat, I would say. Yeah. So people around you also start knowing that they at some point they'll accept you, whether they like it, partially like it, they accept it, so they will live with you on that. So I'm not changing I can adjust to some extent, but I'm not willing to let go of that discipline for anyone at all. So either you be part of that journey with me. I'm not expecting you to कि आप पार्टी करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं नहीं करूंगा या मैं वो नहीं करूंगा. मेरे को अगर 10 बजे निकलना है तो निकलना है. मैं कहीं बाहर भी चला जाता हूँ तो मेरे को ना 10:30 बजे के बाद ना पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है कि बस चल भाई निकल यहाँ से, घर जा, सोना है. सो यू विल में नेवर. कहीं जाते नहीं आप? मैम बहुत रेयर है, बहुत अगर बहुत ही so even if I have my business meetings and dinners, they're early. They don't run into 11, 11:30 because they know that Mr. Chawla is coming. It's got to be at 7. I've managed those expectations very well over the last 15 years. So people who meet me, though, they don't call me up and say, we'll meet up at this hotel at 10 o'clock for dinner. They know that Harmit ko bulana hai, to okay, we will catch up for dinner at 7. So it's about managing expectation even within your ecosystem. So at now people have started making, if I am important for a meeting for them, I will कहीं ये मैंने पत्थर की लकीर नहीं, sometime I have to adjust कि नहीं मैं नहीं मिल पाऊंगा 7:30, 9 बजे कर लेते हैं. So I'll do a 9 o'clock meeting, but then I will probably have a green tea or something, and I'll probably not do a very very heavy dinner. I just have a very small bite. तो मैं अपने उस मामले में मैं वो हाथी हूँ जो अपनी धुन में बट मैं एडजस्ट करने को तैयार हूँ, बट मैं उस एडजस्टमेंट में भी अपने व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, आई विल कंटिन्यूसली, आई विल नॉट लेट गो ऑफ दैट. So I'll not get into a business meeting or something where I'll have a very heavy meal and that's not working out. It won't happen for me. And many times I've gone to friends and family. So it's given you a lot of health benefits, this kind of regime. Massive. And there are times I've gone for get-togethers, family get-togethers, where if the dinner is getting late at 11 o'clock, I am telling the wife of my friend कि भाभी please मेरे लिए खाना अलग से ना 9 बजे लगा देना, मैं पहले खा लूंगा, आप लोग खाते रहना, 11 बजे तक मैं बैठा हूँ. वो भी कर देते हैं. वो कहते हैं पता है इसने 9 बजे खाना है, 11 बजे इसको देंगे खाना, ये खाएगा नहीं. It works out for me. I mean, and my wife will always keep looking that you're mad, you're embarrassing. I said, no, well, that's me.
people, you can get embarrassed, people can embarrass. I'm not embarrassed. So I'm like, I'm happy. You are I'm really good. taking care of your body. Like they say, the body is your temple and the only companion you have. And you're really doing wonders with that. Ma'am, मैंने तो when I started this talk, I said, I thank God and I tell people, this body is on rent to you from the Almighty. If you can't take care of this body, आप जिंदगी में किसी चीज का शुक्राना नहीं कर सकते. इस चीज का शुक्राना नहीं है तो आगे का भी नहीं है. बिल्कुल. यही तो भगवान ने दिया. पैदा पैदा होते क्या दिया था? कौन सा हमें कोई इंटेलिजेंस दे दी थी या कुछ दे दिया था? ये बॉडी दी थी. और वो बॉडी भी ठीक ठाक निकल गई हॉस्पिटल से, आईसीयू में नहीं थी, है ना, जॉन्डिस नहीं हुआ, ठीक निकल गया. तो उस चीज को ही अगर आप उस चीज का शुक्राना नहीं कर पाओगे तो फिर किस चीज का कर पाओगे? That's true. और मैं ये But कहता हूँ, we don't you own the can body, we follow are. this for a while, but day after day after day, that is some discipline. Some discipline. Fantastic. Thank you, ma'am. Thank you. That's so That's good. so you. Yeah. And here I have one question from Meena ji. Yes, ma'am. Cooperation from spouse or partner is required too. टेक्निकली यस एंड टेक्निकली नो, मैम. उसका रीजन ये है कि मेरे मेरी मेनी टाइम्स, अब हम लोग क्या करते हैं, फैमिली में होता है कि नहीं जी, डिनर बैठना है, टेबल पे बैठना है, ऐसे. तो मैंने, अब माय वाइफ इज अ डॉक्टर, तो इफ शी कम्स एट 7:30 एंड आई वांट टू ईट एट 6 o'clock, उसको पता है 6 बजे खा लेगा. एंड आई हैव गिवन दैट लीवरेज कि जिसको जहां लगता है. और सो संडेज आफ्टरनून sure is a family lunch because we're all very busy. So Sunday lunch we all sit on the dining table and eat together as a family. Other days everybody has the leverage because the lifestyle is such. कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है कि नहीं, we don't have that, that liberty or the capability to sit down at 9:30 on the dining table and eat together. We can't. So we have our life. My son is in his own zone. तो जिसको जो ठीक लग रहा है, बट वी आर मैनेजिंग. बट संडेज इज अ सैक्रोसैंट कि हमने दोपहर को लंच साथ में करना है. और संडे का लंच मैं बनाता हूँ बिकॉज मैं घर पे हूँ. तो देर इज नो मेड और पर्सन हुज कुकिंग. आई विल कुक फॉर द फैमिली. तो उन पर प्रेशर होता है कि फादर ने बनाया तो अब तो खाना पड़ेगा, और खाना भी अच्छा होता है. तो वो ऐसा कोई नहीं है. मतलब आफ्टर अबाउट नाउ बीइंग मैरिड फॉर 25 years plus, we've understood that this is how we are. We manage our expectations very well, and it's rubbed off on my daughter, my son, and my wife. So they're all into fitness. They're all very clear how they want, and I have not forced anyone. हाँ, मैंने बस ये बोला कि अगर मुझे तुम दिखे कि मोटे हुए या ये हुआ तो मैं तुम्हें घर से मार मार के निकाल दूंगा. तो मेरे बच्चे भी जिम जाते हैं, वो भी उसी टाइम पे उठते हैं. उन्होंने वो इनकलकेट कर लिया लाइफस्टाइल, विच इज, आज हो सकता है कि वो लगे, बट व्हाट इज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन विद दिस इज, it's great for my wife as a this thing. मेरे बच्चे जब आगे 40 साल के हो जाएंगे तो दे विल रियलाइज कि बाप पागल तो था, बट हमारी हेल्थ ठीक कर गया. तो उन्हीं का भला है. सो इट वर्क्स. दो, बट आई डोंट से कि नहीं आपने ऐसे जीना. आई डोंट डू इट विद दैट. बट द वे आई हैव लिव्ड, दे सी, एज आई सेड, kids look at their parents and they inculcate those habits. It becomes very profound in them. So but the difference is, my son is not an early morning person, so he'll go to the gym at 7 in the evening. As long as he's going to the gym and eating healthy, I'm good with it. He doesn't necessarily need to hit the gym at 5 in the morning. I hit 5 in What the kind of morning because food do you avoid? ma'am, if I want to eat a pizza, I cook at home. I will not buy from Domino's. I want food which is fresh ingredient. I avoid a lot of sugars. At my age, I don't like salt going into my food. I rather put salt ऊपर से खाने में. तो मैं दाल भी बनाता हूँ तो उसमें हल्की सी नमक जाता है, और अगर वो नमक कम है तो आप ऊपर से थोड़ा सा वो कर लो. बट मसाले मैं घर पे खुद कूटता हूँ, करवाता हूँ, क्योंकि बाजार के जो मसाले आते हैं उसमें नमक डाला होता है बहुत सारा, जस्ट टू कीप दी मॉइस्चर इन प्लेस. सो दैट सॉल्ट इज अ लॉट ऑफ सोडियम गोइंग. हम वो पैकेट्स तो खोल देते हैं एमडीएच और उसके, बट उसमें सॉल्ट होता है. सो आई वुड हैव माई खड़ा मसाला एंड आई विल roast them and cook and then put a little bit of salt. So I'm very particular about these things because
जब हम बाजार से चीजें ले रहे हैं, somehow I don't trust the market. I don't trust what's written on the label. uh, because everything and anything is sold. There is no stringency. For point in case, आप जितने भी रेस्टोरेंट्स में इंडिया में खाना खाना जाते हो, आपको किसी को भी नहीं पता, ना मेरे को पता है कि उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है. आर दीज रेस्टोरेंट्स हैविंग हेल्थ चेकअप्स, हाइजीन चेकअप्स, उनका किचन का हाइजीन फैक्टर क्या है, हमें नहीं मालूम. सो फॉर मी, a good restaurant once in a while is okay, but I would rather eat at home. I'd rather cook. I can cook anything. My I cook. My dad cooks. I have a cook who cooks. So we watch our ingredients very clearly. Uh, but ऐसा कुछ नहीं है. I mean, हाँ, इस एज पे आप मुझे बोलोगे कि गुलाब जामुन खाना है, maybe I'll skip it because too loaded with sugar. But one bite once in a while. So there are certain things I totally avoid. आइसक्रीम खा लो, बट वंस अ वीक खाओ. बट आइसक्रीम भी ये नहीं है कि आप पूरा एक टब खा रहे हो, आपने वो एक स्कूप खानी है. मतलब वन हैज टू बी वेरी क्लियर हाउ मच इज दी, यू नो, स्वाद के लिए खाना है. तो यू नो दीज थिंग्स, द पिज्जाज, द आइसक्रीम्स, द बटर चिकन्स आर आर फॉर टेस्ट. दे आर नॉट टू हॉग. Wow, वो स्वाद देना है nice. आपने अपने मुंह को, उतना बस स्वाद ले लो. अब हम अगर बटर चिकन खा रहे हैं तो मैं वो पूरी प्लेट में बटर चिकन नहीं डाल दूंगा, मैं इतना सा डालूंगा, मुझे स्वाद चाहिए उसका, जस्ट टू फील गुड कि ओके दिस इज नाइस, विच इज ओके. बट अब मैं उसमें बोलूँ नहीं, मैं अब इसके 4 नान खाऊंगा और इसकी 3 हेल्पिंग लूंगा, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है. वो तो दिखता है, वो पेट से दिख जाता है कि दिख जाता है. कौन ये ठूस रहा है और हाँ. कौन खाली अपना पेट भर रहा है. So you can go and have the burger also. You can eat anything, everything as you are. अब वो बड़ी बार क्या होता है, हम लोग जाते हैं, बर्गर बड़ा स्वाद लग गया, अच्छा एक और ऑर्डर कर देते हैं. वो जो एक और ऑर्डर कर देते हैं वो आपको मार रहा है. वहां पर आपकी डिसिप्लिन नहीं है. अब वहां पर क्या है, वो कहते हैं योर इंद्रियां आर ओवरटेकिंग योर लॉजिक. हाँ, 4 इंच की जुबान का. और ये जो बात आपने बोली ना, 4 इंच की जुबान, तो when you are capable of actually controlling your urges on eating, you've actually by default created a capability to manage your tongue, and your tongue is your output to your वाणी. तो आधी से ज्यादा जिंदगी में प्रॉब्लम ही इसलिए आती है क्योंकि हम बातें ऐसी बोल जाते हैं दूसरे को कि उसको बुरी लग जाती है, या हम कुछ बातें बोल देंगे, वी डोंट थिंक. सो the coordination between this and this is very uh, uneven. So the moment you are able to control your food, what's in front of you, the discipline, you're able to manage this in this. Do you take any vitamin tablets? No, I am not taking anything because again, I do every 5 months. I get my vitamins checked. They're all good in order. I I eat a very balanced meal. I know मुझे कब नींबू लेना है, कब संतरा खाना है, कितना खाना है. तो I have a meal which has everything in it. तो मैं 2 संतरे नहीं खाऊंगा, मैं एक ही संतरा खाऊंगा. वो फिर जब, बिकॉज उसमें भी शुगर्स है. सो द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग इनटू कि अब अच्छा सर्दी का टाइम था जी, वो 2-3 संतरे छील के खा लिए, दैट्स काउंटर प्रोडक्टिव. सो फॉर मी, स्वाद लेना है और उसकी न्यूट्रिएंट चाहिए, पेट नहीं भरना मुझे उससे. आप अपना एक डाइट प्लान शेयर करना हमारे. अच्छा ठीक है. आई ये विल. अदरक और नींबू वाला पानी. ये तो मैम मैं विदाउट फेल सुबह अदरक और नींबू का पानी पीता ही पीता हूँ. मतलब दैट्स अ नो ब्रेनर. उसमें हनी नहीं डालता मैं, बट वो जरूर पीता हूँ. So you soak it or you boil it? मैं थोड़ा ना रात को सोक करके रख देता हूँ, और सुबह फिर उसको मैं, मतलब उसमें रंग आ जाता है और उसके अंदर उसकी पंजेंसी आ जाती है, एंड देन आई बॉयल इट अ बिट. सो इट्स वेरी, इट्स एंड जिंजर इज अ गुड डायल्यूटिक इन दिस. जिंजर ना आपकी थोड़ा ब्लड थिनर भी है, विच वी लर्न ड्यूरिंग कोविड टाइम. सो इट्स गुड फॉर द सिस्टम. तो नींबू आप बाद में डालते हो? नींबू बाद में, नहीं तो फिर वो कड़वाहट आ जाएगी. वाह. तो अगर Amazing आपको session. Amazing session. We are short of time now.
What And are your it is superfoods? What are the superfoods? What do you have to say about the blue zone diet? आई हैव गॉट नो सुपर फूड मैम। इतने मेरे दिमाग में डालने लग गया ना कि अब ये सुपर फूड है, ये मेरे को, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मतलब वट एवर इज देयर, मैं अब ये नहीं कि ब्लूबेरीज खाऊंगा तो मेरी जिंदगी बड़ी, क्रैनबेरीज खा लिया तो ये हो जाएगा, या किनोवा खा लिया, या मैंने ये खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 49 ईयर से ना, मैं आटे, दाल और इस पे भी जी लिया, क्रैनबेरी भी खा ली, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया। वट एवर मेक सेंस टू यू। स्वाद का भी थोड़ा फ्लेवर आ गया, न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, एंड दैट्स अबाउट इट। इतना मैं कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग को नहीं करना चाहता। इतनी सारी और चीजें हैं मेरा बिजनेस और वो, कि मैं अगर खाने में उसमें घुस गया कि ये, तो फिर तो मैं ये यही करता रह जाऊंगा। तो इतना मैं नहीं दिमाग लगाता। Harmeet ji, are you vegetarian or non-vegetarian? नो नो, आई ग्रेविटेट बोथ साइड्स। Acha. With age I've become a little more accepting of vegetarian, but I've also realized that I'm finding it very difficult. My body is not consuming the dals and the rajmas very well now, and maybe that is because probably आई डोंट नो, अडल्टरेशन है या क्वालिटी खराब है। तो मैं अब आज की डेट में, नुपुर मैम को पता है, मैं अपनी दालें चावल जो है वो देहरादून से ऊपर पहाड़ों के गांव से खुद खरीद के पैक करवा के ला रहा हूँ, यहाँ से नहीं खरीदता, बिकॉज मेरे को अब कोई ट्रस्ट ही नहीं है यहाँ पर। जो हमारी किनारों पे दुकानों पे राजमे और चावल मिलते हैं, वो यू ईट इट एंड यू आर ब्लोटेड, यू आर जस्ट अन अन यू नो, इट्स जस्ट अनकंफर्टेबल द होल डे। Quite an effort to maintain your health, I must say. मैम, एंड ऑफ द डे इट इज फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन एल्स, एंड नॉट बिकॉज आई एम स्केयर्ड टू डाई। इट्स जस्ट दैट जब तक जिंदगी जी रहे हैं तो मतलब उसको तो ठीक तरह जिए। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू। ना मेरे को कोई मॉडल बनना है, ना मैंने कोई एक्टिंग करनी है, ना मेरे को किसी को खुश करना है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एंड इट जस्ट it's a nice feeling when you get up in the morning for yourself. Absolutely. Only for your, very selfish. I'm a very selfish person. I do it for myself, not for my wife, not for my kids, not for my parents, nobody, just myself. And it just helps you. That selfishness allows you to be more selfless to others. that's so great. So with this, we end this talk. It was a very encouraging and yes, enlightening talk to change our lifestyle and to love ourselves, love our body, and of course, eat mindfully, do your exercises, and yes, then your business is done. So with this, thank you very much, Armeet, for being Thank you, with ma'am, us. for having. Thank you to everyone for all your questions, and I hope it was interesting for all. Yes, thank you, everyone. Thank It's you, very interesting. all Thank the you. people. Yes, please. Yeah, Umaji. No, I said very interesting. Thank you so much. Thank you. Thank you, Maji. Thank you for your This patience. Thank you so much. Have dose, a great day. giving us this dose that you got to get No, going. but I am also with folded hands saying whatever you heard me. Don't go into कि यार ये क्या था, हमें करना है. Don't put pressure on yourself. Take it नहीं, easy. करना नहीं, थोड़ा इंस्पायर तो हो जाता है ना अपना हाँ, एक डाइट आप प्लान इंस्पायर हो जाइए, टेंशन में मत आ जाइएगा कि ये करना है, ऐसे करना है आप। हाँ, बट अपनी जर्नी जिस दिन भी शुरू करो उस दिन आपके लिए अच्छा है। Yes. So with this, thank you very much.